कल आपका परिचय हो गया था और अभी पुरस्कृत विजेताओं की जो लेखकीय प्रक्रिया रही है, उनके जो अपने रचनात्मक अनुभव है, वो एक हमारे दूसरे हॉल में कार्यक्रम चल रहा है, उसमें भी अनुराधा शर्मा पुजारी जी ने अपना वक्तव्य दिया। मैं भुवनेश्वर डेका जी का आपसे परिचय करा देता हूँ। भुवनेश्वर डेका प्रख्यात असमिया लेखक और पांडु कॉलेज गुवाहाटी के अंग्रेजी के पूर्व विभागाध्यक्ष हैं। आपके कुछ प्रमुख प्रकाशनों में अरविंदो कलिता जिंदाबाद अभिनंदन करता हूँ और अब ये मंच मैं भुवनेश्वर डेका जी को उनको देता हूँ। वे अब अनुराधा जी से अपनी बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम 30 से 40 मिनट का है, कृपया इस समय का ध्यान रखें। भुवनेश्वर जी। Namaskar. So a very good morning to all of you. I'm of course not so comfortable in Hindi. I like to speak in English, so I'll go with this. So I'm very glad here because Anuradha Sharma Pujari from Assam, the Sahitya Academy Award winner, is with us. Whatever she writes as a literary worker, we must have to know about her inner world, what is going on inside, how she makes this journey. So we will have a talk exchange. Beforehand, I like to say, she is Anuradha Sharma Pujari is one of the most popular writers in Assam, as I like to convey to all of you. Namaste, distinguished gathering. I salute and gratitude to have this position today. So having all total 26 works, including 12 fictions, 6 non-fictions, 6 short story collections and other writings. Anuradha Sharma Pujari is very much popular in Assam. And what is very important to inform you all, as being the representative from Assam, I have been her 20 years critic. I am proud of that. I have gone through her inner world, wrote so many articles nationally and internationally. So she has 6 categories of fictional works. That is very good. That is very informative, I like to tell you all. So whatever she writes as fictional works, first of all, she is concentrating on campus fiction, then fictionalization in history, treatment of history, then the psychological and clinical fiction she writes, then most of the time she has constant engagement towards ecological things, I mean from eco-critical point of view. Then there is another important point I like to tell you, that is she breaks convention from the 90s in Assamese literary heritage. So how she breaks convention, we will learn it from the conversation. Okay, Namaskar, Sharma Pujari ma'am, thanks to meet you. I'm very glad again. I like to know that you are having a kind of huge literary waiver along these years, I think from the 90s. She emerged in the 90s very suddenly in a unique and with a difference. So I like to ask you, I mean this is not a question because these things should go to the public, to the readers. So what is your literary commitment? Can you make it clear? ऑन कर दीजिए। आप चेक कीजिए कर लेना। हेलो तब तक ये हमारे पीछे दूसरा Well, thank you very much and good morning everybody. बोला गया है हिंदी में बोलने के लिए, लेकिन I don't know how much good Hindi I could speak. मैं प्रयास करूँगी बोलने के लिए।
But still, I am now going to give an answer to Bhuvaneshwar Deka. That's about my commitment. My commitment is to find out the reality and truthfulness towards my writing. I want to give the better judgment to my characters, to my stories, to my subjects. I want to depict perfectly. I think this is my commitment. राइटर्स को तो सब समय ऐसा ही होता है शायद मेरे जैसे, अच्छे से लिखना, टू बी ऑनेस्ट विद द राइटिंग्स, और जो सब्जेक्ट है उसको अच्छा जज करना, not to be biased from any way. Yeah, that is, I think this is kind of commitment, kind of not commitment, this is my commitment, not kind of commitment. Thank you. Yeah, reality must be the base of all writers. That is true. And what I like to inform all of you, already I have told you that she breaks the convention. I mean, till 21st century, that happens in all of the literary scene, that the treatment of feministic outlook. So in Assamese literature till today, authors are there, they are treating feminism, I mean the idea of feminism in their literary works. But side by side, Onoda Sharma Pujari breaks the convention, but in what way? That means she is not all the time concentrating her studies, concentrating her attention towards the female only. She is making a kind of exploration into the interplay between the genders, I mean the male and the female. So I finally in the last decade observed that she started this kind of observation as a intersectional feminism, giving much priority to the males. So it's lucky enough, I am very also glad to inform you that some of the scholars working under her fiction on male psychology still here present in this gathering. So why? Because male psychology is important from feministic point of view. That is unique in Assam in the 21st century. Although writers are there in Assam treating feministic outlook, treating feministic themes, she is with a difference. So why? Because she is giving the interplay, I mean giving much importance to the male psychology, the issues the males normally confronting with. Okay, next I like to move over to another aspect, that is the interesting thing, because Onoda Sharma Pujari being a writer from vernacular language, from Assamese language, she is most of the time treating the national issues. There is a novel, Married, you know, that is very much popular in Assam. It treated a theme that is, I mean, the post-colonial condition. After Nehru, what happens? What was central government's policy to the northeastern region? I mean, the breaking of NAFA, Northeastern Frontier Agency, Nagaland and Arunachal. So this issue she takes up in her fiction, Married. So why my actually inquiry, I want to know, and I should, I like to kind of exposure from your side. So why, how you develop this confidence that you are most of the time treating national issues, being an author of vernacular language? Okay, first of all, I am an Indian, and being an Assamese, my perspective also as an Indian, and not only Indian also, my expression, my perceivedness, it is universal. My thought process is universal, because I have seen that cry, love, that is joy, it is same to all human beings. I think you are concentrating on
proceed to the other recent national issues, I mean the socio-political. Yeah, definitely, because it is the recent political issues I have to deal with it. Because it's a very serious issue, that's why I brought it into my novel. And if I say that one of my novel that is married, it is about Nepal of before independence, post-colonial, that is not post-colonial, before independence, it is about Nepal, Northeast Frontier Agency. At that time, actually, a very educated lady from Assam who educated in Edinburgh, and she, when she came back to Assam, she was played the role of education officer and roamed in a very remote areas. There at that time there was no vehicles to roam about, but she did it with elephant, horses, on horses back. She roamed around and just distributing all over the tribal societies. She delighted education with education. And that novel, in that novel, I brought the socio-political issues at that time. So you were taking up this national issue? Yeah, nationally I took up the issues, and after that many issues been raised, like about economy, and we are now in a global village, so definitely it comes automatically. This is the only reason. So it's nice. I must ask you one more thing, that is, all the writers, they must concentrate on their heritage, I mean heritage of their community. So ma'am, I like to know from you, so in Assam, since 9th to 10th century, from 9th to 10th century, this Assamese literary heritage. So do you believe that you best represent this tendency, I mean Assamese literary heritage till today? Can you feel yourself that you are the best representative of this community, I mean the Assamese culture and heritage? It is really very difficult question, because time will judge. Time is the best judge, and time will judge my. I think you have the role. confidence. Yeah, time will judge my role, what I am doing now. But there is a very long, glorious legacy of Assamese literature since 9th, 10th century. Yeah. Since Sajjapada to other ancient literature, like at the time of Ananta Gandhali, Hampshire city, Ramshire cities, and after that medieval age. I have to mention about the Hamchandra Borua and Anuram Bhegi Alfubon, all of them, and then after the modern age, started from Lakshmanath Borua, yeah, Chandra Kumar Agarwala, then after the, you can say postmodern, but the modern age started from that era, and nowadays also the modern, those modern literature like Homen Barbahai, Indira Goswami, Dr. Indira Goswami, they made a very golden part already. And I am in the last part, that is nowadays, and after me there will be a long part, the other generation. That means you give it to time. Yeah, to us. And other generation will make the part after me. So this is the only, I just work. I work hard and very sensitively. जो भी करती हूँ मन से करती हूँ, जो भी लिखती हूँ मन से लिखती हूँ, and I
withdraw myself from the biasness. Yeah. जहाँ biasness का जो ये है, वहाँ में कभी-कभी ऐसा भी होता है, what you see that is not right. You are solely responsible for That's this why you have attitude. to withdraw yourself from that situation, and after that you have to write. So I'm trying to write my best. Thank you. Yeah. I Okay. don't know about what is my role now and whether I could make the legacy as well before, but Thank still I am trying. Thank The time will be the time will say. Thank you. Iyak ekhon orunno ase in Assamese. A forest here there was. Interesting thing I like to convey to you all. Where is that forest? You may be having a kind of curiosity. Yes, from Assam, I like to tell you, that kingdom, that periphery, that forest, green land, that is within her domestic compound. Actually the novel, I mean the setting, is within her domestic compound. That means close to her window panes, there was a forest. And she was constantly looking at it, its decline, degradation of the physical environment. Already she has told about it in the writer's mid speech. So okay, but how do you nurture a kind of constant engagement towards the phenomena of nature? Because whenever I observe most of the works you give birth to, all are having this physical environment in a different dimension. So why do you nurture this type of engagement towards nature? I think I'm a child of nature. Child of nature. Child of nature. I think everybody here, they're part of nature. But we human beings sometimes forget about it, that we are not part of nature. Okay? भूल जाती हूँ, क्योंकि अलग से देखती हूँ. ये एनिमल है, ये टिकली है, ये पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, हम लोग अलग हैं. The relation between that human and non-human nature, I want to make relation, integration and relation between human and non-human. Okay. Sometimes we human being, actually nowadays, human being always we think of that we are the authority. These trees and other animals and they are not like us. The second grade. It's the second grade. The nature is the second thoughts, not prime thoughts. So that sometimes what we do, we are not aware of destroying forest, destroying the somebody chopped off trees. We are not aware. It's well, the light is not coming, that we can cut it off. Okay. Only like that. So we don't have that passion, that love towards the nature, because that we human being already withdraw us from nature. That is why to go back to the nature, actually to go back to the nature, I want to go back nature all time, in all moment, and through my writings okay, also, thank you. I give Thank the you. masses. We gather some points from it, but there is a good news. Learned scholars before us. There is an American movement, eco-criticism, that has come up, rising up. It has come to India a few years back. So your text, Iyak ekhon orunno ase, is very much significant in terms of eco-criticism, this American movement, because ecological space, cultural space, everything is nowadays a subject of concentration and interest for all writers nowadays, because how this physical environment takes a decline for the interference of the common people. Okay, thank you. This is a text. But our culture is also a heritage of keeping environment.
because from my childhood I have seen that my mother pouring water on tulsi plant. Yes, ma'am. That is respect to the plant, you know. Yeah. I have seen some deities, they are having, you know, swans, those elephants and all. That means to respect the animals. I think our culture already taught us this thing. So you have this. Yeah, that's why I'm not going to the American movement first. That is a different thing. Yeah. Literally It's a intellectual different- movement. That is a different thing. Yeah, as a critic you can say. That is a different thing. Yeah. Okay, but Definitely. yes, one thing, because last 15 or 20 years you are consistently creating something in the name of fiction, non-fiction and all that. We want to know, how do you take life, attitude to life? That is our curiosity. Okay, attitude towards life. In one word, to be a rainbow in someone's cloud. That is my attitude towards life. Life is bigger than all. Actually, life teaches many things, and I'm always positive. With positivity, I deal my life. Yes, I believe that sometimes life doesn't give you what you want. But if you think as like that, yes, I will have much more from life. That is my thing. When you were speaking of life, I observed a kind of historic smile within your lips. Yeah. That means you are self-sufficient. I'm always positive with my life, because the full life is always, you see, it is full of pain and sorrows and everything. It is like an empty bottle. If you put amrit, then it will be amrit. And if you think that is no, I will put some happiness there, that is, you will get the happiness. And if it is a thought process, how you take the life. It is a thought process. If you think that, oh, why it is not happening to me? If I get worried about it, and the whole day I am thinking about these things, so how can I be happy? So you have to be positive. You have to be positive. No, it is. I think it is not my cup of tea. Okay. That is good for us. So one thing, Yeah. I know that you get involved yourself for longer duration with journalism, state journalism. You are an editor of a monthly UGC listed journal. Then also you are editor of a weekly SMS famous weekly under Asomia Protein Sardin. Okay. So do you search for life through this country's news system, or what is your own engagement that you are all the time involved with journalism? How journalism give a it is my something career. to Actually, I started my career with journalism, and through journalism I started my literature career. As a career, literature is my love, and journalism is my passion. Through literature, I can find the deeper sensitivity of life. But through journalism, I can make out the truth. I can inculcate the truth, what is reality. So it is vice versa. It helps me a lot. Are you internally sad whenever you have some discouraging news items, discouraging situations? Definitely. It hurts me a lot, but it is truth. What is its implication to literature? That means from journalistic thought line and literature. How do When I'm in the newsroom, I just bluntly see the photograph of dead men. Okay? But when I come back to my home, when I go to sleep, then I, in my inner world, always asking me that why it is happening, why it is happening, how could I stop this?
being a human being, how could I stop this? These things are working in my mind. And I can say for good journalism, I believe in good journalism because good journalism can make our world a better place. But sometimes what happened, today's journalism is completely changing, the character is changing. Can you say it is yellow? Not yellow, Yes, I cannot say the yellow. Yes, you can say it is colored. And Yeah. sometimes politically motivated, sometimes other kind of, other kind of issues, it impacts on that. So you can't say that the journalism means you are getting the truthful news. It is truth. Okay? But sometimes it is bifurcated. Okay. Sometimes bifurcated. Okay, And thank I you. do, but my duty is to find out which is right and which is wrong. Juxtaposition. Yeah, which is right, which is wrong. And I have that emotion and that sensitivity. How to make the news benefited towards the family and the society, and stand for the people. Stand for the people is the duty of a journalist. Thank you. So we are having a mini India in front of us. So don't put your say to the established junior writers. Think it is a mini India. What is your say towards the junior writers from the country? Whatever you write honestly. I think new generation is too brilliant and they deal with so experimental issues I have seen. So I just wonder how can they think of these things. So they are so brilliant and they have full of power. So in a right way, if they practice literature, I think our Indian literature would be different from all world literature. बहुत अलग सा है क्योंकि इंडिया में जितना डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, जितना ही कलर है, it is for the young writers and now it's a global village. There is no, actually I write in Assamese in regional language, but in whole India, if you see that everybody there bringing their culture and very varieties of culture. So these are the things and it is so colorful and I think the young generation can cope up with this and they will do differently from us. My hope is like that. They should start in the time. अलग सा करेगा, कभी-कभी ऐसा तो लगता है इतना powerful creativity तो हम लोग जो कर रहे हो उससे भी बहुत ज़्यादा बहुत सा आगे निकल जाएगा. ऐसे this is my hope for the new generation. Thank you. Actually, we are very glad you are having a multiple thematic patterns, thematic concerns in your literary web. Already I have told my distinguished audience that she is nurturing a multiple kind of thematic patterns, starting from campus fiction to psychological, clinical fiction to many other. She also, of course, she says that she is very much optimistic about life. Alzheimer is a disease. I think you have a fiction about. I have a fiction on Alzheimer and loneliness of old age. Title is Jolochobi. Means पानी के जो छवि होता है, पानी में जो छवि आ जाता है इससे. So it is based on a lonely lady who was a very brave and brilliant once, and she was suffering from Alzheimer and dementia afterwards. And fortunately and unfortunately, I am her daughter. And I have seen the unknown world of psychology.
So that's why I have to make relationship with some doctors also. I have to analysis, and in sociology subject, one of my subject was psychology, and it helps me out to write this novel. And in this novel, I have seen really the life is really different. What we have seen, बहुत अलग है. Life का जो dimension वो बहुत अलग है. And we can't see even what will be happen tomorrow. The oldest problem is now the biggest life tragedy actually for human being. So that I have seen in my life, and that's why I try to depict all these things into my novel. And nowadays you can say that nowadays actually I concentrate on my own subject, that is nature. Very few people actually think of nature, but nowadays the this generation, coming generation, they were very much aware of nature. And now that's why I try to say on behalf of birds, on behalf of trees, on behalf of the river, on behalf of stones, everything. So I'm very happy to make relationship with this type of, getting close to the nature. Thank you. So these things will help all of us. Because they are voiceless. That's why I want to be the voice. So in some of the universities in Assam, our fictions have been prescribed in the academic syllabus, and I think this will help the students' community. Undoubtedly, she is a literary figure from Assam, concentrating on various multiple things. So Nahar of Neribilisa, there is a compass fiction. I think there is an amount of hint regarding love. Is it? Yeah, it is a very romantic novel when I was studying in Riverview University, and some political issues are also depicted there. And it's a beautiful life, and I was just starting to learn life in Riverview University. And those stories are all stories that is happening in my life, already happening in my life, and that's why I wanted to pen down on it. Okay. Yeah. One interesting thing I like to tell you, all of us from Assam. Whenever Anuradha ma'am treats the theme of love, I mean the relation between husband and wife, there is one story I remember. You will be surprised to know that the husband is looking through a window, sitting that side, and the wife is sitting opposite to him on that side, looking another window, and she treats a theme of union, showing the picture of opposite nature. So why? Because she is all the time talking of psychology, interplay between genders, how the males suffer, how the males have some ambitions. So all these things, psychologically, everything is there in her fiction. We are surprised from the 90s. See which a difference emerges in the history of Assamese literature. And I hope it is a proud moment for us, as I am an Indian, of course, in Assamese, Sahitya Academy has given her the real recognition. And what do you think? I'm thankful to Sahitya. Yeah. So what about your translation works? Yes, some are translated already to Hindi and English, but not much. I think this book should be translated to English and already been translated. Vashati Parasar has done it, and you can have this book in Amazon. It is Forest Wales. Name is different. Forest Wales. You can get there the book. But still, I think that in other language, in Indian language, other Indian language, it should be translated properly, so that people aware of the nature and aware of future, what our future generation will have.
Are they going to have drinkable water? Are they going to have breathable air? These are the questions. So, such a destroying of the forest is a major problem nowadays. I have seen it in a micro level, but in macro level, in the whole world, this is happening. Cities are expanding, and under the name of development, everything has been done. But there's growth, lots of buildings, industries, everything. But how can you stretch a river? But how can you expand a hill? How can you expand a forest? You know, how can you get oxygen out of it? This concrete never give you back oxygen, no? The groundwater has already dried up everywhere. These are some investments. So that's why I am writing this book, Yatekono Nasi. That's why it is a picture of our future. Picture of the future. Picture of the future. And that's why for the awareness actually, it should be translated to many language, and I request Sahitya Academy also to translate it carefully from their own side, and I'll be very grateful then. It will be, of course, significant for green cultural studies. Yeah, green culture studies. Yeah. So okay, but I have some information against the sea, against the ocean. In USA, people are writing about your fiction in USA. Do you have this information? Yes, somebody says That they are working. Yeah, they are working in USA. One of a university student told me like that. But still I am not aware of it. So, okay, I think we are coming to the end of the discussion. So it's a slogan, not to the, as an Assamese writer, it's a slogan that she is not belonging to Assam alone. Like all other award winners of this session, she also is belonging to Indian literary culture. That we hope so from Assam. Thank you all for patient hearing. It is a big literary author. Another Sharma Pujari is with us in Assam. There is a big future, of course. I say thank you to Sahitya Academy. Thank you very much. Thank you, Bhuvaneshwar Datta, and thank you, the audience, for your patience. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत ही धन्यवाद भुवनेश्वर जी। ये पूरी बातचीत हम एक इतनी बौद्धिक तरीके से और सुनते हुए कई बार लग रहा था जैसे हम कविता सुन रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो जीवन को लेके एक रचनाकार का उसकी जो सोच है, जिसके बारे में अनुराधा जी ने कहा कि मैं किसी अन्य के बादलों का इंद्रधनुष होना चाहती हूँ, ये अपने में ही इतनी सुंदर कल्पना है। आप एक तरफ उसमें देखें कि इसमें एक रोमांटिसिज्म तो है ही, लेकिन उस इंद्रधनुष के बाद की जो और कल्पना है, जिसके बारे में रचनाकार कहता नहीं है, वो बाद में घटित होता है। यानी कि बादल आए हैं, बारिश होगी, और जब बारिश होगी तो फिर उसका परिणाम क्या होगा, फसलें उगेंगी और प्रकृति सुंदर होगी। आप देखें कि एक रचनाकार चीज़ों को किस तरह प्रस्तुत करता है। ये जो जिस रचना पर आपको पुरस्कार मिला है, निश्चित तौर पे जैसा अनुराधा जी ने कहा कि इसको बाकी भाषाओं में भी अनुवाद किया जाना चाहिए। अकादमी का ये मुख्य कार्य है, मुख्य उद्देश्य है, और हम बाकी 23 भारतीय भाषाओं में पुरस्कृत रचना को अनुवाद करा के पूरे देश के और विदेश के पाठकों तक ले जाने का काम करते हैं। अनिवार्य रूप से हम इसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ इस पुस्तक को अनुवाद करवाना चाहेंगे। आप सबके प्रति बहुत ही आभार, और बहुत ही अच्छे प्रश्न भुवनेश्वर जी ने किए जो कि हम सबके मन में थे। आपने उन सभी प्रश्नों को अपनी तरफ से अनुराधा जी से किया, मैं बहुत आदर और धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। मित्रों, इस सत्र का जो अगला चरण है, अब उस चरण में हम बांग्ला के लेखक आदरणीय ब्रात्य बसु जी और सुबोध सरकार जी के साथ इस मंच पे होंगे।
मैं बहुत ही आदर के साथ अजय जी, ब्रात्य जी आ गए हैं और हमारे बीच में सुमोद जी भी आ गए हैं। हाँ, ब्रात्या बसु जी जो कि बांग्ला के पुरस्कृत रचनाकार हैं और सुमोद सरकार जी जो कि बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध कवि और साहित्य अकादमी के बांग्ला परामर्श मंडल के संयोजक हैं। आप दोनों का ही अकादमी की ओर से मंच पर स्वागत है। मित्रों, ब्रात्या बसु जी का कल आपको परिचय प्राप्त हो गया था। बहुत ही संक्षेप में सुबोध सरकार जी से आप सबका परिचय करवा देता हूँ। सुबोध सरकार प्रसिद्ध बांग्ला और अंग्रेजी कवि हैं। बांग्ला में आपके 29 कविता संग्रह प्रकाशित हैं और अंग्रेजी में 4 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत सिटी कॉलेज में अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, बंग भूषण पुरस्कार, जीबी यूनिवर्सिटी से मानद डीलिट की उपाधि, गंगाधर मेहर राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से आप विभूषित हैं। आप वर्ष 2016-17 के लिए फुल ब्राइट फेलो चुने गए थे। आप आयोवा विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के विजिटिंग फेलो और IWP आयोवा में प्रतिभागी कवि के रूप में रहे। आप पश्चिम बंग कविता अकादमी के अध्यक्ष तथा साहित्य अकादमी में बांग्ला परामर्श मंडल के संयोजक हैं। अब ब्रात्य बसु जी से संवाद का सिलसिला सुबोध सरकार जी शुरू करेंगे। ये मंच में उन्हें देता हूँ और आप जानते हैं कि ये कार्यक्रम लगभग 30 से 40 मिनट का है। प्लीज। थैंक यू अनुपम जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू and welcome to face-to-face program in which some of the awardees are going to participate. And Rattu Boshu already you have known, you have seen him yesterday, last night, receiving the award with 23 other awardees. So I congratulate everybody present here to listen to Rattu Boshu, and we are going to have a conversation that Rattu Boshu has agreed to. And it will be not just question and answer kind of thing, rather it will be a dialogue. It's a dialogue. So I'm looking forward towards this dialogue as you are also looking forward. So on my first thing, just 2 lines I would like to say before I begin. I worked with Rattu Boshu for more than 11 years together in City College in Calcutta. He was the professor of Bengali, and at that time when he was working with me in City College as professor, he was a very, very talented young theatre personality, and already Oshalin was there on stage, and Oshalin was one of his first Opsing in English. In English, he says that it should be called Opsing, and that made a tremendous impact on the theatre people and also on all of us. And this is how he began with a tremendous Masrunne, which was published from Anand, and another play which is running into more than 200 pages, I think, that is Fyodor. That's based on the life and works of Fyodor Dostoevsky. So this is how how palpable as a playwright he is. And he has been in the variety of forms. He has been directing movies, he has been
playing in acting in theatres and also in films, in movies, a lot of poems, and he has recently published a brilliant bunch of poems, about 30 poems on theatre. So this is the kind of theatre poetry that we have got recently. So welcome Dr. Boshu. I have a lot of things to tell him, but the first question that I would like to begin with is his favorite area, art and power. He is a man at Power Center, as you have known. So how he combines the nuances of art with the pressure, with the burden of power. How does it work in between this art and power? Thank you, Shubhodda. Yes, of course, Shubhodda and myself was colleague in City College. Shubhodda was a little bit wrong. We worked together 15 years. 15 years. So after that, I never was in politics in my life, but unfortunately for the mass movement of Singur and Nandigram in West Bengal, I got involved there. And after that, some of civilians, quote unquote, though it's very diabolic word, civilian intellectual now in Bengal, who are civilian and who are intellectual and who are politician, is now jeopardized. So I got involved, and from 2011 I had to come in ministry. The first time in my life I fought the election and I won, and my Honorable CM, she has chosen me for ministerial post, and last 3 times still I'm a minister. Yeah, that's, I think Shubhodda is calling power. Incidentally, Shubhodda is also in a power. There is a Bengali phrase. Power, actually power, মানে বাংলায় পাওয়ার বা না পাওয়ার আমরা কি পাচ্ছি কি পাচ্ছি না, which I am getting or not. Shubhodda is very regional convener of Sahitya Academy. He is writing poems. He is famous in Bengal at 70s decades, 1970 decades poet. So 40 years he is writing. And in Bengal, I think, what is called power, I don't know. But for me, it's a shield. It's a shield. It's armory. From where you can, because the traditional thinking of pre-globalization era, a writer or a playwright or a theatre activist must be anti-establishment. So what is establishment? We have seen in big media house who are working and they are in the power. Who works for big academy, they were in power. Recently I have written one Bengal biography of Bertolt Brecht, because there is no biography in Bengali about Brecht. I think after Glasnost and Perestroika, people came to know that Brecht was actually not a politician, but he was a Communist Party member till 1930. But later on, we came to know, when all documents came after the decline of Berlin Wall, that Brecht was tortured by GDR communist state. When he has written the trial of Lipillas, how a state oppressed him to reduce the and to confine the text and to change the text. Then he has written the condemnation of Lupulus.
So he has two versions in a play. One is aiming Hitler, the next version aiming Stalin. And meaning has been changed within 10 years. The first version was in 39, the second version was 49 when Hitler was dead, and Stalin is doing his cultural, the socialist realism in East Europe, by Yuri Zhadanov, the main collaborator of Stalin, cultural collaborator. So when Brecht was asked in Huak, anti-American activities, he was charged that he is a communist. Wow, un-American activities. So he asked his friend, is it very serious? When he got that subpoena. Then he said, his friends asked him, do you think you deserve that? He answered, they must summon me. I did nothing for communism, for that. So, actually what is power, what is not power is, I think, is ambiguous. Everybody, when in a patriarchal society or a matriarchal society, everybody exercises power. I have seen in my life. Everybody exercises power in the little domain or big domain. Then if I want to get a shield, an armory, why I am not taking this? Why not? Because everybody is trying to get this chair, any form of chair. The chair must be changed, but not desire. So, I can't change the desire, but I can change myself. Even I think even a small little magazine can be a center of power. Yes, they are very much in center of power. They have their own writing ghetto, writer's ghetto. And in the 70s or 80s, I have seen in my state that if you are a leftist, you will getting better privilege. And if you are not getting any. So Tarashankar Banerjee is a famous writer of Bengal. Incidentally, he was the president of Congress, State Congress. And Tarashankar was never honored like Manik Banerjee, because he was a Communist Party member. So, I think the political identity is not the factor for a writer. Yesterday Shubhata told me, if somebody is disciple of Ramakrishna or Vivekananda, they were in fact, they are calling Bhrakto in intellectual arena in Bengal. They couldn't enter in any public civil domain. But now the situation has been changed. Maybe I am Mohanty, maybe I am a politician, maybe I am a doctor, maybe I am a legislator, but you should concentrate on my writing. I think that's or my expression. He is absolutely right. I just remembered as I was telling you this morning, Harold Pinter, for example, the great British playwright, possibly the last British recipient of Nobel Prize, Harold Pinter, who called Tony Blair stupid. And he was an international headline. So Tony Blair, forget Tony Blair, you just think about Harold Pinter in 1958, as early as the year I was born. 1958, there is a connect between Bhakta Boshu's plays and what Harold Pinter said at that time, so I would like to have this connect and have his interpretation. He said, look at the world, in the post-war world, especially Europe. So I have no line of demarcation between reality and phantasmagoria. The phantasmagoria of horror,
phantasmagoria of displacement, the phantasmagoria of terrible, destitute citizens. So look at it. So reality and phantasmagoria, reality and quote-unquote unreality. And he said that the true and the fake. So in 1958 he said that even our plays are baffled somewhere, confused somewhere. We cannot determine what is true and what is fake. Now we are living in the post-truth age. He said in 1958, and when he was, and this has been there thematically and also structurally in the plays of in the theatre of Bhakta Boshu, and I find that even in Mirzapur, for example, the play which has been awarded Sahitya Academy this year. So even Mirzapur, that he has a kind of reshaping the history, reconstructing the history, but he is not denouncing the history, but at the same time he has a lot of new interpretations, and that is somewhere the play is brilliant. So it's a history but not history. It's fiction but not fiction. So its truth is there, but at the same time the fake elements which are also exposed. And he has done this throughout his career. What is your take, Doctor? Please. Thank you, Shubhadra, for your question. I firmly believe that which is yesterday, which was intimate, which was personal, dealing with people. Maybe it's fake, maybe it's lie, maybe I am being double-faced or triple-faced or quadruple-faced. The society will transfer like this. So which was personal yesterday, tomorrow it will be social. If I do wrong with people, if I'm faking with people, it's not the question of politicians or social or businessmen or corporates. It's a dealing of a person to person. If I am fake with you, if I do lie with you, it coming social tomorrow. It will be a social phenomenon tomorrow. Right. And what Pinter said it socially, the previous Nobel laureate, Italian Nobel laureate playwright, Luigi Pirandello, I think he felt it from his personal life, because we all know that Antonietta, wife of Pirandello, she was mad and psychic. And the suffering of Pirandello in his life, in his career, for his wife, because he never thought to quit his wife. He protected her, he loved her, he cared a lot. But Antonietta, she was really she was very deranged, mad. Yeah, she was very bipolar. So Pirandello realized that then who am I actually? That's the fragmented reality, contured reality, destructive reality. The one fragment is maybe careful husband, another is not, another is writer, another is who loves other women. This kind of reality he projected in his writing. I think after 30 years after, Pinter have watched it in society. All are fake. Pirandello derived from the First World War, and Pinter derived from Second World War. The human social values have been changed. As Nietzsche said, God is dead. God is dead. There is no value. There is no feeling for people, and the state has been changed as cannibal, with their poor
still is what is going on in Ukraine. I think war is going on everywhere. Maybe socially, politically, personally, where is going on. So truth, what is truth? And what is lie? So we all know that sun rises in the east every day. That's true. But maybe you can say that which I am watching the sun, is my reflection. I am watching it is coming from the west. So is perception. I think the true reader can identify what is truth, what is fake. Maybe within the power, maybe you are anti-establishment, against the power. Because this double dealing, I have seen in my life from any great writers, and you know this is a contradiction. This is a contradiction of life. When Vijay Tendulkar has written Kanyadan, he portrayed a famous Dalit writer. Arun Athole, we all know, I am not referring the main character, but we all know whom he depicted as Arun Athole, the famous Dalit writer of Maharashtra. That is his contradiction. So contradiction is there. And in my Mirzafar, I will end with my, in my first act of last of Mirzafar is, the introspection of Mirzafar was finished in this way. Who am I actually? Am I the man of British? Or am I man of Siraj? I was man of Siraj. But then I got to transfer as man of Clive. But I failed as a man of Siraj. And I failed also the man of Clive. Then who am I? This is really brilliant, because you just imagine that the statement made by Harold Pinter in 1958 has come alive again in his play, and I believe that this is fantastic interpretation. I would like to, if you allow me to, because from last night I have been thinking about it. After hearing Balajan Nimari's address yesterday, I have a question, and this question, I know that this question will disturb me for long. But I have great respect for nativity or nativism. Desi culture. Absolutely fine, but not. But what am I going to say? You know, for example, you have been writing on Kiran. You have already written 400 pages on Betel-Brecht, unfolding the chapters, different chapters of Betel-Brecht's life, and finally, what he said, according to Betel-Brecht's documents, that we came to know that it was almost like dropping a bomb on the belief that he did a lot of things for communist movement and all that, and he disagreed finally. So it's like that. So what I am saying, that he has been writing a play on Dostoevsky. He has been writing a book on Betel-Brecht. But do you think that writing a novel about it, the first Bengal theatre? But do you think the starting point of Bengal theatre? Professional Bengal theatre. Yeah, it was nice to hear that in the phantasmagoric world of Kafka, the Kafkaesque world as it was quoted in Metamorphosis. So it can have roots in India or subcontinent. Okay, fine. The question is, all that we have been doing, all that we have been borrowing from the West, or all that we have been reading in Western literature. So all of them have seen roots in Indian literature. This is somewhere I really fail. I'm sorry to say that I fail. That it's not that they have taken everything from here, or we have taken a lot of things. We have taken a lot of things. We have borrowed a lot of things from Europe and from the West, and also from Latin America. But the question is not that in order to be Deshi, I have to say that we had Kafka in us. We had Dostoevsky in us. Thematically, if it is love and Kafka is a Czech, but he's our property. A few of the Dostoevsky may be Russian, but he's our property. Yeah, because it is international. So Mahabharata is Indian, but it is world property.
Exactly. This is what, internationalism is also equally important. So when we talk about the boundaries of nationalism, when we restrict ourselves to our boundaries, then one has the freedom to go beyond boundaries, to have the transnational identity, as you find in Indian literature and also in Western literature. So now the boundaries are melting everywhere. It's in Europe, it's in America, it's Latin America, and also in India. Even in the tribal literature, you find the boundaries are melting. So who is tribal? What the hell you were saying? I am a tribal. What right you have to call me tribal? You are tribal. You may be Banerjee, Mukherjee, whatever. You are also tribal. We are all tribals of the world. So these boundaries are melting now all over the world. So how do you react? No, first Sir was saying he is an immensely good speech. Yeah. It's a very good speech, but a thought-provoking speech. So he said about Indianness, about Indian identity, some kind of thing. I don't know you all were there yesterday or not. So like I am saying about idli or dosa, it's South Indian food, essential. Then maybe it's Indian. Maybe, I don't know. Sarson ka saag, essentially it's a Punjabi food. After that it's Indian. Maybe the Pongal, I think it Tamil food? Yeah, Kerala food. So maybe it's first is Kerala food. Then maybe it's Indian. Chutki mach. It's Bengal, essentially Bengali food. Maybe after that Indian. So I believe in regional identity. When I am connect myself in my language. Again I am saying, when Brecht was in America, he was in suffering because he can't speak English properly. He couldn't speak. And he said, I am confined, just like in Tahiti Island. So I am more fluent and frequent with my mother language. How can I deny myself? Yeah, of course. So I can identify myself through my language, through my cultural expression. Yes, of course I am an Indian, but first and foremost I am Bengali. And I think this regional identity is the variety in India, the democracy of India, after 60-70 years gone, and after partition and after freedom, all bureaucrat of a bureaucrat, I forget his name, maybe John Stewart, he has written to a Mountbatten a letter that after 20 to 30 years, India subcontinent will be demolished because the difference between a Punjabi and a Tamil or an Assamese and Malayali is more than between a German and British or Dutch or French. But still in India exists because it's multiple voices, multiple language, multiple religion, multiple identity. So we must address and the respect my individual identity as a Bengali. I respect your identity as a Punjabi or Assamese or Malayali or Tamil, etc., etc. So I don't believe Hindu, Hindustan, this kind of concept. I think Indianness, what you are promoting, finally in cultivating in this very dangerous pathway, which I think is anti-Indian. The concept of India, it still emerged in the world as a power. This is exactly what he has said. I believe that the European mosaic of the cultural plural identities, the mosaic is so strong in Europe. So everybody
has his well-defined identity here. No, he said yesterday Yeah, that that was it. concept of state as coming from the colony. Yeah. But in ষোড়শ মহাজনপদ, Chalukya, Rashtrakoot, Koshal, this kind of state, the concept of state was there before colony has come in Yeah, mind, yeah. and before Islam aggression also. Yeah. This kind of state of concept, yes, of course, it is not a pan-India concept. This is different identity concept, Yeah. and we still carrying this difference within the Samanvaya. Yeah, exactly, Samanvaya. Even the small little languages, I don't say dialect, even the languages in India, maybe more than 600 languages. So how they are beautifully surviving the onslaught of the major languages. So in a way, I find this, as Dr. Bashuji has said, that this Indian race is the most important thing for us. India is very important thing for us. But it doesn't. But we must respect our regional identity. But at the my same mother time- language. So that respect is the most important thing. We don't do it, and that's why we have a different definition of national or nationalism today. So I would like to come to if they have any questions, Dineshji, can we invite questions, or he likes to have questions? You have to ask us. How? Not Two questions. Not from audience. You have to ask. Oh, not from others. I'm sorry, as this is the format that they have determined. Power. There's a call power. Power concept. Even every individual is power, center of power. Okay, there is You have 10 to 12 minutes left. 5 minutes more. 10 minutes. 10 minutes more, so we can also, apart from your plays, you have been writing essays, excellent essays. He has recently published a book of essays, and then he has poetry. Then he is writing so many things. As at the very beginning I said that he has been working in a variety of literary forms or art forms. So now you have been writing, you have just completed very progressed book, and also the novel. And already, one of his novels, that is possibly the first novel, I think, Yeah. Adamrita, that has been serialized in a Bengali portal. It's a weekly. In a Bengali weekly, it's called Robhar. So that has already been accepted, and a lot of people are reading that novel. So how do you manage? That's a big question for me. I would like to know the mystery that you have been a minister, you are in charge of so many difficult positions. You have been directing plays, you have been directing movies, you have been writing serious essays, you have been writing novels, you have been writing poetry, you have been attending so many things, you have to chair so many sessions, and so many political responsibilities you have. So when do you write? That's my question. When do you write and how do you manage time? There was a famous writer in Bengal whose name was Shibram Chakraborty. He was very famous for his spoofy, his small key writing. Yeah. And one journalist asked him, Shibram Chakraborty is very famous writer in Bengal. I think the Bengali who loves literature all gone through by Shibram Chakraborty's writing. So one journalist asked him when you were writing. So he answered, what is the daily routine? And I will wake up, then I have to go take some breakfast, then I go to sleep. Again I wake up in the afternoon, I have to eat my lunch. Then I think after lunch I must take some rest. Then I
got to go in my bed. In the evening. In the evening again, when I awake, I feel so tired. For this long sleeping. So again I have to go to sleep. Then the next day, very next day, echo. The journalist said to him, then when you are writing? No, why? The next day? Next day? What is it? What is the next? So my answer is, everything I am doing, the next day. Not in this. This is a fact, really. You know, when I am writing, this is my actual reality. The next day reality. You can call it next day reality. And Surreal, all are surreal. Surreal. And there is a play called Boma. Boma means bomb, written by him, which was successfully staged in Calcutta and also elsewhere. And it was centering around Aurobindo. Aurobindo Ghosh, Yes, you have known Aurobindo Ghosh. Everybody here, I hope that you know Aurobindo. And that case, bomb case, if you know about it. the terrorist movement of Bengal from 1908 to 1922. That was the perspective. But it was, on one hand you have the bomb case, and on the other hand you have the spirituality. Yeah. That was the epitome. That was the epitome of Aurobindo. Yeah. And I would like to hear, I never asked him, but I would like to hear what is the real gap or the real demarcation between this side and that side. This side involving the bomb case and that side at Pondicherry, Spiritualism. and all that. So you say just before, it's a very interesting point you have you put it, the construction of history, Right. how I interpret history. When I have seen Quentin Tarantino's film, The Inglourious Basterds, Tarantino said the history is not informations. History is that what I actually want to watch. He has showed in this particular film that Hitler was dead in a cinema hall. The bastards, team of bastards, they attacked a cinema hall and they killed Hitler. But that's my history. I want to see Hitler in this way. So I was inspired by Tarantino's this comment. And when I did Boma, I have written it and I made it in stage. So I thought how I reconstruct my history. Always there, the freedom fighters. They are glorious. But I think that typical, the group politics which Communist Party has seen, from CPI to CPM to CPI-ML, it is coming from that time. And spiritualism and bomb, actually if you go through, there are a lot of revolutionary, they have changed themselves in spiritual life. Upendranath Bandyopadhyay, he was like that. Lot of revolutionary. I think this is kind of disappointment in politics, in daily politics. And Aurobindo was pioneer. And he inspired us. He in Alipur bomb case, only he got to free. Shift Croft, I think,
is the name of the judge. He was batchmate of Aurobindo. He left all. All were convicted. Khudiram died, you know, he was hanged. Later, Indubhushan Rai committed suicide in Andaman. But Aurobindo was free. Aurobindo was free. And then he converted himself as a spiritual man and he went to Pondicherry. So I tried to, many people are saying that he is an escapist. It's a narrative of Aurobindo. But I don't think so. I think he was he was distressed and detached about the group politics. So he left. And later on, when I went through his writing, I got my support. I think that's the way, in this way I wanted to see all this group movement, the politics, the deconstruction of history. I can say it. So the last small question, because Anupamji is giving me signal to back up. Wind up. So the last question is what is the future of Bengali theatre? Is it dark or white, whatever, or grey? See, theatre will be done after COVID-20, after this pandemic. The theatre is suffering the most because theatre is day-to-day life interaction. When I got to watch a film in the movie theatre, I watch and then I come out for my home. But when I am going to a theatre hall, after watching this play, I must go to the backstage to take his hand. It's brilliant. What I am doing. But I can't touch him now. So COVID actually trying to kill theatre. But theatre will die at any cost. Maybe in a garage, maybe in a beach of a vast sea, maybe in a schoolhouse. So theatre will continue and theatre again will revive. And in private you have said that you are not... But you can't convert in any other form theatre. Film is not finished. Now we are all watching film is personally in app. Yeah. Nobody is going to theatre hall to watch a movie. But theatre will survive. I firmly believe. Okay, that's fantastic. But in private, you have said, just one line. In private, you have said that you are not going to direct theatre. Limit is my private. I don't. Why? Yeah. I know. Yes. Of course, I will do theatre, but not now. I want to make some movies now. Okay. Okay. With this hope, I conclude that he said that theatre will survive everywhere, not only in Bengal, but everywhere. But it is now suffering because theatre is the basic expression. Basic expression, as he has said. As Aristotle says, mimesis. Yeah. If there is no touch, this touch is very important in theatre. So that is missing, terribly missing. So I hope that theatre will finally survive, as Dr. Goshuji has said. Thank you very much. Thank you all. Namaskar. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रात्य बसु जी, आदरणीय सुबोध सरकार जी। निश्चित तौर पे उस टच की बहुत ज़रूरत होती है और वो विचार का टच कैसे साहित्य में आता है, उसकी क्या परंपरा है, आप इस बातचीत से महसूस कर रहे होंगे। बहुत ही विचारोत्तेजक बातचीत थी और कई विमर्श खड़ा करने के लिए ये बातचीत, थोड़ी देर की बातचीत कई बड़े विमर्शों को खड़ा कर सकती है। मैं बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ आप दोनों की वक्ताओं के प्रति। और अब मैं आमंत्रित करूँगा गुजराती के रचनाकार यज्ञेश दवे जी को और आदरणीय विनोद जोशी जी को अगले संवाद के लिए।
यज्ञेश दवे जी से कल आपका परिचय हो चुका है। विनोद जोशी जी से आपका मैं परिचय करवा देता हूँ। डॉक्टर विनोद जोशी प्रख्यात गुजराती कवि और समालोचक हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियों में परंत, शिखंडी, उदग्रीव, मोर पीछा, हवानी हवाली और चाकोनो दानो मगनो दानो शामिल हैं। आपकी सैरंध्री जो कृति है, जो एक लंबी काव्य श्रृंखला है, वो आजकल बहुत ही चर्चा में है। उसका हिंदी अनुवाद भी होके एक पत्रिका ने पूरे सर्गों के साथ उसे प्रकाशित किया है। आप उमाशंकर जोशी पुरस्कार, क्रिटिक अवार्ड संधान सहित अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत हैं। प्रोफेसर जोशी गुजराती साहित्य अकादमी, गुजराती साहित्य परिषद और भावनगर साहित्य सभा सहित अनेक शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों के सदस्य हैं। आप महाराज कृष्ण कुमार सिंह और भावनगर विश्वविद्यालय में गुजरात के स्नातकोत्तर विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। अभी आप साहित्य अकादमी के गुजराती परामर्श मंडल के सम्मानित संयोजक हैं। अब ये संवाद सत्र में विनोद जोशी जी को सौंपता हूँ। वे यज्ञेश दवे जी से संवाद कायम करेंगे। विनोद जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। वैसे साहित्य का शब्द जो है व्यापक रूप से भाषा है, और भाषा में जब अभिव्यक्ति करते हैं हम लोग, तब कोई ना कोई कमिटमेंट इसमें शामिल है, क्योंकि भाषा अपने आप में एक कमिटमेंट है, एक ऐसी ऊर्जा है भाषा जो नैसर्गिक नहीं है, फिर भी उनको लेकर हमारे रचनाकार रचनाएं करते हैं और हम व्यवहार के लोग अपने व्यवहार करते हैं। अगर भाषा नहीं होती तो कहा जाता है कि त्रिभुवन अंधकारमय हो जाता है। यदि शब्दा ह्ययम ज्योतिरासंसारम न दीप्यते, हमारे बीच भाषा का जो रूप आया है वह सृजनात्मक है। इस सृजनात्मक रूप को अगर हम देखें तो ये व्यवहार के रूप से काफी अलग है, महत हैं और काफी ऊर्ध्वीकृत रूप है। तो साहित्य का शब्द जब हम चर्चा में लाते हैं और एक साहित्यकार से जब सामना होता है, तब हम किस भाषा की बात कर रहे हैं और भाषा के किस रूप की, किस ऊर्जा की बात हम कर रहे हैं, यह हमारे जहन में आना चाहिए, हमारे चित्त में यह रहना चाहिए। मेरे साथ बैठे हैं गुजराती के एक वरिष्ठ कवि जो कि अनुआधुनिक कवि के रूप में परिचित है, जिसे हमने कल साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया है और उनकी जिम्मेदारी हमने बढ़ा दी है। एक सरेराश मनुष्य जिस भाषा में बात करता है, उसी भाषा में एक सर्जक कविता करता है, उपन्यास लिखता है, क्रिएटिव ऐसे लिखता है, कुछ भी विधा में जब काम करता है, तब उनका भाषा के साथ कोई अजीब सा रिश्ता बंधा रहता है। यज्ञेश दवे एक ऐसे सर्जक हैं जिन्होंने ऐसे माध्यमों से काम किया है
भाषा के अलावा भी इनकी कुछ विशेषताएं हैं, मैं तो यह भी कहूँगा कि विचित्रताएं हैं कि एक सर्जक में एक साथ इतनी सारी बातें अलग अलग होकर भी एक सी कैसे बनी रहती हैं। आपको मैं बताऊं कि ये विज्ञान के विद्यार्थी है, इनकी शाखा, आप कृपया सुनेंगे प्लीज। इनकी जो विद्या शाखा रही है वह विज्ञान की है और इन्होंने जिस दिशा में अपना संशोधन किया है, रिसर्च किया है, यह इकोलॉजी है। यह वनस्पति शास्त्र के अभ्यासी है। इस बात को मैं आगे जाकर कुछ और भी खोलूंगा, क्योंकि भाषा और वनस्पति ये दो चीजें ऐसी हैं जिसमें एक अपनी बनाई हुई है और एक नैसर्गिक है। ये दोनों के बीच एक सर्जक के रूप में इनकी आवन जावन या एक दूसरे शब्द कुछ को लेकर अगर हम कहें तो आमना सामना कैसे रहा है ये हम उनसे जानेंगे। इन्होंने कुछ निबंध लिखे जिसे हम क्रिएटिव एसेज कह सकते हैं। इनकी भी उनकी 5-7 किताबें हैं, कविता के इनके 5-7 संग्रह हैं। कल जिनको अवार्ड मिला और उनकी कविता की किताब है गंध मंजूषा। इन्होंने कुछ बाल साहित्य भी लिखा, कुछ अनुवाद भी किए। इन्होंने कुछ ऐसे इंटरव्यूज भी किए जो कि कुछ वरिष्ठ प्रतिभाएं हैं उनको नजर में रखते हुए। तो यज्ञेश दवे जिनका मैंने कुछ छोटा सा परिचय करवाया, इससे ये लगेगा कि ये वर्सेटाइल क्रिएटर हैं, कुछ अजीब से क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं, देश विदेश में घूमे हैं। हम उनसे उनकी साहित्यिक प्रतिभा जो है इनके संदर्भ में कुछ यह जानना चाहते हैं कि इकोलॉजी के स्टूडेंट होने के बावजूद उन्होंने भाषा को कैसे अपनाई अपने सृजनात्मक दिशा के इस उन्मेष में। यज्ञेश, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपको यह पूछ रहा हूँ कि विज्ञान को और ये इकोलॉजी को दोनों को साथ में रखते हुए आपने इस भाषा का सृजनात्मक रूप, इसका निर्माण कैसे किया? आपकी सोच में यह कैसे आया कि मैं कविता लिखूं, मैं क्रिएटिव ऐसे लिखूं, मैं साहित्य से मेरा ताल्लुक बनाऊं? यह आपको कैसे लग रहा है? मेरे ख्याल से सबसे जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम मनुष्य योनि में पैदा हुए जिनको भाषा मिली है, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे कोई विद्या वाचस्पति हो, सबको एक समान भाषा मिली है। वो भी एक इनबिल्ट है। किसी भी प्राणी को कुछ संज्ञा के सिवा कोई भाषा नहीं है, तो भाषा मिली है तभी तक आज कंप्यूटर उससे भी आगे हम जा सकते। तो ये भाषा ही है कि उसमें एक रस होगा, और रस कब जाता है, कब पनपता है, कब आगे जाके उसके डालियाँ और फैलाते हैं, वो पता नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं कि आपने डॉक्टरेट तो इकोलॉजी में किया और आप कविता कैसे लिखते हैं? मैं कहते दोनों के बीच में जरा भी कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तो ये उदाहरण देता हूँ कि कितने गुजराती लड़के हैं जो एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं और गुजराती में एमए किया है, उसकी संख्या
लाखों में तो होगी, अगर BA MA की लड़की है तो उसमें से तो कोई हर एक तो कभी नहीं बना। और मेरे जैसा जिसके कोई वास्ता नहीं है, वैसे वास्ता तो है मेरा, क्योंकि मेरी भाषा है और मेरा साहित्य है, मैंने घर में पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, विश्व साहित्य पढ़ा है, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये मेरी चीज़ नहीं है, ये सब मेरी चीज़ है। और सुरेश भाई एक बहुत अच्छा कह, सुरेश जोशी बहुत अच्छा कहते थे कि अपनी भाषा अच्छी बात है, उसका प्यार करो, मगर दूसरा भी देखो, जो मेरा है वो ही अच्छा है, वो ऐसा नहीं, जो भी अच्छा है वो मेरा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे काफ़ी चीज़ों में एक विज्ञान से आने के वजह से कुछ एक और फैकल्टी भी आप में हो सकता है कि उसको आपको मदद करे, आपकी एक विश्लेषणात्मक फैकल्टी हो, आपको एनालाइज करने की फैकल्टी हो, आपको सिस्टमाइज करने की कोई फैकल्टी हो, वो कुछ हद तक काम में आ सकते हैं। और कुछ ऐसी कविताएं मैंने लिखी हैं कि जो अगर मैं ये बैकग्राउंड से नहीं आता तो मैं नहीं लिख सकता। जैसे कि ह्यूमन जीन्स के ऊपर मैंने कविता लिखी है, जिसमें एक बुक कहती है कि ये जीन है, वही ब्रह्म है और वही परमात्मा है और वही सब कराता है। अगर ये जीन नहीं होता, हमारे बीच के अंदर जेनेटिक्स का जो जीन है वो नहीं होता, तो हाथी घास नहीं खाता और ये और नहीं करता। यही में हमको जो भी कुछ कराता है वो जीन कराता है। शादी भी वही कराता है। बाप मर जाता है तो 2 दिन दुखी रहते हैं, मगर बाद में सोचते कि हम पूरी जिंदगी दुखी नहीं रहना है, तो वो जीन ही सिखाता है कि आगे बढ़ो, बाप मर गए छोड़ दो पीछे। तो ऐसे कुछ विषय थे जो बिल्कुल मेरी साइंस की विधा से ही आए और तभी संभव बने। जगदीश, बात यह है कि आपने जो सीखा, वैसे आदमी जन्म लेता है तब तो कुछ वो सीख के तो आता नहीं है, माइथोलॉजी या जेनेटिकल साइंस जो भी कहें, लेकिन भाषा तो वो बाद में सीखता है। हमारे पास ये चॉइस तो है नहीं कि हम गुजराती सीखें या हिंदी सीखें, या हमने तो सीख ली। जब भाषा सीखते थे तब हमें पता नहीं था कि हम भाषा सीख रहे हैं। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा कि आपने गुजराती के बजाय हिंदी सीखी होती या जर्मन सीखी होती या फ्रेंच सीखी होती तो आप कुछ ज़्यादा लिख पाते, ज़्यादा समझ पाते? ऐसा कुछ भाषा का सिलेक्शन आपको कभी डिस्टर्ब करता है? नहीं, मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं जर्मन में लिखता तो मुझे जर्मन इतनी ही अच्छी लगती जितनी आज गुजरात में, क्योंकि वो मातृभाषा है। ये वो मैं अगर होता तो वो मेरी मातृभाषा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो लैंग्वेज इज inferior and no language is superior। सब एक सोशो पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लैंग्वेज का जो स्तर है वो बढ़ता घटता है। एक जमाने में उर्दू नहीं थी, मतलब फारसी कोड की भाषा, तो एक पॉलिटिकल इसका एस्पेक्ट भी है, कौन सी लैंग्वेज कहाँ पे, इसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट भी है। अभी लोग चाइनीज सीखते हैं क्योंकि वहाँ उसको धंधा व्यापार करना है, तो ऐसा नहीं लगता मुझे। आई एम वेरी एट होम विद माय लैंग्वेज गुजराती। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहुंच पाता, हम लोग भाषा लेकर नहीं आए, हाँ, हम लोग भाव लेकर आए हैं। और भाव तो पूरी दुनिया में कॉमन है। जैसे कि मुझे पीड़ा होती है तो एक जर्मन को, एक जापानीज को भी पीड़ा होगी। मेरी और उनकी पीड़ा में कोई फर्क नहीं है, लेकिन मेरी और उनकी भाषा में फर्क जरूर है। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी पीड़ा को आपकी भाषा या आपके आनंद को आपकी भाषा पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर रही? पूरी तरह से तो हम कैसे कह सकते हैं, इतना बड़ा समंदर है, अगर मन में भी कितना उमड़ता रहता है, मगर एक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लैंग्वेज, एक बेंड टुवर्ड्स लैंग्वेज आदमी में होता है तो होता है। आपको लगता है नहीं कि होता भाषा है तो में, नहीं होता।
भाषा में आप पूरी तरह से अभिव्यक्त हो पाते हैं, ऐसा आपको लगता है? मुझे तो लगता है कि काफी हद तक मैं व्यक्त कर सकता हूँ अपने आप। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ अधूरा छूट जाता है। अधूरा तो ऐसा है कि जो हम अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारे विचार भी है वो एक जैसे छोटे छोटे रचकण होते हैं, वो हवा के अंदर ऐसी ऐसी गति करते रहते हैं, जिसको कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमारे चित्त में भी ऐसे ही विचार को एक ही डायरेक्शन में नहीं जाता, वो भी एक ब्राउनियन मूवमेंट चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि ये चित्त की जो ब्राउनियन मूवमेंट है, अभी मैं बात करता हूँ तो मुझे मेरी बात भी याद आ रही है, और 2 दिन के बाद अमेरिका में जाने वाली है, मुझे अभी भूख भी लगी है। तो ये जब सब चीज़ें साथ में आती है ब्राउनियन मूवमेंट, उसको मैं नहीं बता सकता। मैं यही कबूल करवाना चाहता था आपसे। एक सर्जक के चित्त में जो चलता है, जो उमड़ता है, उसका पूरे रूप से आविष्कार करना वैसे संभव नहीं है। कुछ हद तक तो जा सकते हैं, लेकिन पूरा तो अभिव्यक्त नहीं कर पाते। तो इसका मतलब मेरी समझ से यह हुआ कि भाव भाषा से आगे है ना। तो आपने कविता भी की, आपने गद्य में भी, प्रोज में भी काम किया, क्रिएटिव एसेज में, फिक्शन में नहीं किया। फिक्शन में नहीं किया, क्रिएटिव एसेज आपने लिखे। तो भाषा के ये तो रूप जिसमें आपकी कोई चॉइस रही होगी, तो इसमें भाव आपको निर्णायक लगते हैं या आपके विचार आपको निर्णायक लगते हैं? मुझे लगता है कि दोनों एक साथ संपृक्त होकर ही आते हैं। तो एक चीज ऐसे उदाहरण दूं मैं कि हम किसी माला बनाते हैं तो वो एक गांठ लगाते हैं सस्य की, ताकि जो विचार है वो फूल है वो दूसरा गिर न जाए। तो मन में एक बार भाव और शब्द, भाव और विचार और भाव दोनों का एक, और शब्द भी, कभी एक लाइन आ जाती है कविता की, उसके पीछे 6-7 महीने तक राह देखनी पड़ती है, फिर दूसरी लाइन आके टपकती है, फिर 4 लाइन लिखो, फिर 25 लाइन लिखने के लिए आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ता है। मगर एक चीज जो आ जाती है, एक गांठ बन जाती है, फिर चाहे आप में इसमें मोती पिरो, चाहे उसमें आप फूल पिरो, चाहे आप उसमें आप गुंडमाला पिरो। आपको ये आविष्कार लगता है आपके भीतर का, या आपका एजेंडा होता है? क्या होता है? नक्शा हुक्म इमारत चले, वृक्ष चले निज लीला आप चलते हैं, बिल्कुल। अगर मैं नवकथा लिखता तो मानता हूँ कि उसको मैं एक स्थापत्य मानता हूँ, तो जिसके अंदर कई कोण गवाक्षर पे मूर्तियाँ हैं, बहुत बड़ा मंदिर का स्थापत्य है। मैं लिखता हूँ वो तो एक छोटी सी मूर्ति है, ज़्यादा भी नहीं सोचता। फिर आप स्थापत्य की बात जो कर रहे हैं, मतलब आकार की बात कर रहे हैं, ये छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आकार तो है ही। आपने ऐसी कविताएं लिखी हैं जो बहुत ही छोटी हो, और आपने ऐसी भी कविताएं लिखी हैं जो दीर्घ कविताएं हैं। तो आपका इस स्थापत्य के बीच का जो आना जाना है, ये कैसे तय होता है? शुरू में तो जो आई थी कविता, वो दीर्घ कविता के रूप में आई थी। वो कैसे आई थी, उसकी जो मैंने पहले कहा था कि उसकी एक पथरेखा, ट्रैजेक्टरी हम नहीं बता सकते, और ऐसा भी नहीं है कि वही बहुत कोई गहरी बात हो, उसको खुद को भी सोचना पड़ता है कि ये कैसे चीज़ आई हो। और छोटी कविताओं का जो मेरा रस रहा वो जापानीज हाइकू और प्राकृत गाथाएं और सुभाषितों में से आई, और उसी में से मैंने लिखा कि अगर मैं 6 पेज की कविता लिखता हूँ, शुरू में मेरी कविताएं 2 ही छपी थी, निरंजन भगत ने छापी थी, एक 9 पेज की थी, एक 10 पेज की। तो मुझे लगा क्या मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ 2 लाइन में या 3 लाइन में, मैक्सिमम 4-5 लाइन में। तो एक समास करना
व्यास करना वो भी एक कला है, तो समास करना वो भी एक कला है। तो मैंने कहा देखें, चलो इसमें विधा में देखें क्या होता है, और मुझे बहुत मजा आया उसमें भी लिखने में। आपका I consider my short poem as one of my major works. तो आपका ये जो कन्फ्रंटेशन रहता है विधा के साथ या स्थापत्य के साथ, ये आपकी अभिव्यक्ति पर, भाव और भाषा के संदर्भ में आपकी अभिव्यक्ति पर कोई जोर लगाता है, कोई सकंजे में लेता है, क्या होता है जब आप छोटी या बड़ी ये सोचकर जब लिख रहे हैं तब? छोटी कविताओं को तो मैं ऐसे कहता हूँ कि वो आई बड़ी कविता के लिए तो राह देखनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसको भिगोना पड़ता है, उसके ऊपर फिर पानी छिड़कना पड़ता है, फिर उसका प्लास्टर करना पड़ता है। तो बड़ी कविता में तो ये होता है, छोटी कविता वैसे कविता वैसे छोटी या बड़ी तो होती नहीं, पुरानी या नई नहीं होती। कालिदास ने तो ऐसा लिखा, पुराण मित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्य वद्यम। जो पुरानी है वह उत्तम है ऐसा नहीं है, नहीं है तो ये अवज्ञा के पात्र है ऐसा भी नहीं है। संतः परीक्षाय परिभजन्ते मूढ़ः पर प्रत्ययेन ये बुद्धि। जिनको पता है उसको पता है ही, और जो मूढ़ हैं उनको तो कुछ कहने का ही नहीं है। लेकिन प्रश्न तो यह रहता ही है कि अलग अलग स्थापत्य में अगर हम सृजनात्मक शब्द को डालते हैं तब हमारी समानताएं, हमारी सहजताएं और रूप का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर कोई अखिल रूप हमारे सामने बनाता है। तो सर्जक का मेरे ख्याल से वही पनपती है और आस्वाद के लिए वही क्षमता रखती है। यज्ञेश जी, आपने अपने व्यवसाय में प्रोफेसरी तो नहीं की, आपका बोलना तो वैसे बहुत कुछ नहीं हुआ सभाओं में, लेकिन आपने नहीं आता है मुझे, नहीं आता। आपने आकाशवाणी में काम किया, मतलब समय के साथ काम किया। आपको पता है कि कितनी सेकंड्स में कितने चंक आ जाने चाहिए। आपने ये भी स्टेशन डायरेक्टर के रूप में किया कि कौन कौन से कार्यक्रम लोकाभिमुख बन सकते हैं और लोगों की अभिरुचि को किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं, बनाए रखते हैं। तो इसके कुछ आप अंदाज आपके अनुभव के ये कह सकते हैं? आकाशवाणी में आपको क्या एक बात है कि एक साइंस में पीएचडी किया हुआ एक लड़का, उस वक्त तो लड़का भी नहीं, 30 साल का हो गया था, बिल्कुल अनजान ऐसे कोई माहौल में जा चुका, और मेरे से कोई वास्ता नहीं था रेडियो का और आकाशवाणी का और मेरी पढ़ाई से, मगर मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है कल्चर में, इंटरेस्ट हिस्ट्री में, इवन ज्योग्राफी में। अगर मैं कोई तालुकेदार के पास जाऊंगा तो उसका भी नक्शा देखूंगा, और यूक्रेन के पास कौन सी सीमाएं लगती है वो भी मैं देखूंगा। तो इस सब चीज़ मुझे इंटरेस्ट थी, और ये रेडियो में ऐसा मिला कि मुझे सब तो फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ जो कहते हैं, बिल्कुल डाउन ट्रोडन टू बिल्कुल शानी उमाशंकर जोशी और हितेंद्र देसाई जैसे लोग भी, हम उनका भी एक साथ मिला। तो काफ़ी कुछ पाया मैंने दिया है मैंने, मेरी अपेक्षा अनुसार मेरी जो शक्ति है उतना अनुसार दिया है, मगर मुझे लगा है कि मैंने लिया ज़्यादा है। कोई छोटा आदमी भी अगर हमारे स्टूडियो के अंदर आके रिकॉर्डिंग करके जाता है तो कुछ ना कुछ तो दे के जाता है। कोई भी हमारा टॉकर आता है वक्ता, तो मैं चाय पीने ले जाता हूँ और अनाप शनाप से उधर उधर की बातें करता हूँ, और उनके पास इतना ले लेता हूँ कि जितना इतने समय में तो ले लेना चाहिए मुझे। वो रिकॉर्डिंग की टॉक तो है ही, कि सिवा तो ऐसे बहुत लोगों का मुझे एक कहता है कि एक
साथ मिला और प्यार भी मिला, काफ़ी कुछ किया भी। आकाशवाणी के बेस्ट प्रोग्राम ऑफ द ईयर पूरे इंडिया में, रीजनल लैंग्वेज में नहीं, उसके ऐसे 13 अवार्ड मैंने मिले। आपको बार-बार अवार्ड मिला आकाशवाणी से? हाँ, आकाशवाणी का 13 अवार्ड मिले, 3 तो ट्रॉफियाँ मिली वाजपेयी जी से और अडवाणी जी से मैंने। और वो भी प्रोग्राम अलग अलग थे, किसी साइंस का प्रोग्राम में फीचर था, तो कोई डॉक्यूमेंट्री थी, तो कोई पोएम का ड्रामेटाइजेशन था, तो कोई किसी और विधा की। आपके व्यवसाय में आपकी साहित्यिक प्रतिभा का सम्मार्जन करने में काफ़ी मदद की, ऐसा मान सकते हैं। यज्ञेश जी, एक तो आपसे थोड़ा गंभीर सा सवाल पूछना चाहता हूँ। वैसे आपकी कुछ कविताएं सुनेंगे, लेकिन जीवन के प्रति आपका अभिगम कैसा रहा है? एक तरफ आप इकोलॉजी के ज्ञाता रहे, दूसरी तरफ आकाशवाणी के माध्यम से आप जनजीवन के ज्ञाता रहे, एक तरफ आप एक सर्जक के तौर पर भाषा के साथ आपकी कन्फ्रंटेशन होती रही, ऐसे रहे। तो यह सब में आपने जीवन के लिए कौन सा दर्शन चुना या आपने पाया? बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, यही थोड़ा रहने जो अभी थोड़ा विश्लेषण लीला मेरे आगे। अभी तो आपको बहुत एक लीला कहो, जो भी कहो, लीला ही हमारे सामने है। और मैं ये मानता हूँ कि अभी हम पृथ्वी के सिवा कोई दूसरा ग्रह नहीं है, जीवित ग्रह नहीं। एक छोटा सा पानी का एक आभास मिल जाता है मंगल पे, तो हम खुश हो जाते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि ये हम जो ऐसा कर रहे हैं, तो हमारा जीवन तो नहीं, मतलब हो सकता है पूरी सृष्टि का जीवन भी ना बचे, इस दिशा में भी हमारी मानव जात जा रही है। तो मुझे तो लगता है कि मैं तो क्या कहूँ, कोई एक इंसेक्ट होगा ना, वो चाहता होगा कि ये पूरी मानव जाति है वो नष्ट हो जाए, और बॉम में जो भी करना है वो करे और हमको फिर से पनप दे। क्योंकि ये उनकी ही धरती है जितनी हमारी है, मगर उनका हमने काफ़ी कुछ लूट लिया है। तो यही वनस्पति की लुप्त जातियाँ, प्रजातियाँ, प्राणियों की, पक्षियों की बहुत खुश होगी जब हम नहीं। बहुत कुछ लिखना है अभी आपको, आपके पास अभी काफ़ी समय है, हम ये प्रार्थना करें। तो अब आप क्या करना चाहेंगे इसके बाद? सच पूछो तो कोई कहता है कि कविता लिखना बहुत ही कठिन है और सर्वोच्च, उसको एक उच्चता, अगर वो वर्ण भेद देखे तो उसको ब्राह्मण माना जाएगा कविता, बाकी कोई वैश्य जो भी हो। मगर मुझे, क्योंकि मैं लिखता हूँ इसलिए मुझे लगता है कि इतना इसमें कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कविता लिखना। कोई फिक्शन लिखना बड़ी बात है। कोई छोटा सा लड़का आजकल का लवर मुछिया आता है और अपनी कहानी सुना के जाता है, तो इसके ये पात्र कहाँ से आते होंगे, ये सिचुएशन कहाँ से आते होंगे, ये मनोसंघर्ष कहाँ से आते होंगे। पात्र बदलती है तो भाषा बदल जाती है, फिर 2 आदमी, फिर 3 आदमी का संबंध, फिर ये प्लॉट, मतलब मेरा मगज काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में भी एक लिखना है मुझे। और काफ़ी अच्छी बात तो ये भी है कि एक आदमियों ने, मनुष्यों ने किसी भी विधा में या किसी भी फॉर्म में स्वरूप गढ़े हैं और स्वरूप तोड़े भी हैं, स्वरूप नए गढ़े हैं। तो पहले की नवलकथा, आज की नहीं, नवलकथा में भी अनेक प्रकार की नवलकथा आ रही है। तो हो सकता है कि भविष्य में मेरा जो ब्लेबरिंग हो, मेरा जो एक क्या कहते हैं, आत्मसंभाषण भी नहीं, ब्लेबरिंग तो क्या कहेंगे, सन्निपात हो मेरे मगज का, वो सन्निपात कोई एक फिक्शन के रूप में भी उतर के आए। यज्ञेश, आपने अपनी गली के बारे में भी लिखा है, आपने माचू पिचू के खंडेर के बारे में भी लिखा है, बेबीलोन, या इतना सारा आपने अपनी कविता में ये संजोया है। तो मुझे लग रहा है कि आपका जो संवेद है
यह पूरे विश्व से भी आगे जाए, ब्रह्मांड को वैसे वैसे देख रहा है, तो आपने यह कभी सोचा है कि कोई आपको भी देख रहा है, जो आपकी इस गतिविधियां हैं इनका कोई तारतम्य निकाल रहा है? तो आपको यह प्रश्न अपने आप को कभी हुआ है कि लोग मेरी कविता को, मेरे सृजन को या मुझे किस तरह से ये परसेप्शन कैसा होगा मेरे बारे में, यह कभी आपने आत्मलक्षी ढंग से कभी सोचा है? मुझे लगता है कि ये भी एक लालसा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मेरे दो बेटे, मैंने लक्षिता पढ़ता हूँ, मेरे घर में भी बहुत साहित्य का वो था, दोनों बेटों को उमाशंकर जोशी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। एक बड़े को तो पता है क्योंकि उनके घर में ले गया था। तो अगर मेरे सामने ही एक मेरी अगली पीढ़ी का एक इतना मूर्धन में कवि, मेरी उसकी बाद की पीढ़ी में ही बिकम्स अ नॉन एंटिटी, ही डजंट एग्जिस्ट, उमाशंकर डजंट एग्जिस्ट फॉर हिम। तो ये तो होने वाला है, जो टिकेगा वो टिकेगा, या तो जैसे आपको पता है भगवती की तरह पूरा नष्ट हो जाएगा, कोई फिर से देख लेगा कि यार ये यज्ञेश देवे ने ये माचू पिचू पे ये लिखा था, ये मेरी घड़ी उत्पत्स्यतेस्ति मम कोऽपि समाज धर्मा कालो जयम निरवधिर विपुलाश्च पृथ्वी। तो आपके कोई कंप्लेंट है इसके बारे में? आपकी कंप्लेंट है कि उनको पता नहीं? कंप्लेंट नहीं है, मुझे पता है कि यही होता है। आपका नजरिया वैसे समाधानकारी है, नेगेटिव नहीं है, मगर ये एक वास्तव दर्शी है कि मैं कैसे ऐसा मेरे बारे में सोचूं कि मुझे ऐसे पढ़े, मुझे ऐसे समझे, जो समझने वाले समझ गए। यज्ञेश जी, आपकी कुछ छोटी कविताएं जिसको आप कहते हैं कि ये हुई, चुटकी में हुई, तो कुछ सुनाइए, क्योंकि हाँ चल कितना टाइम है? 5 मिनट आराम से। एक धूल गुच्छ की कविताएं हैं और इसका अनुवाद सामने बैठी है मेरे, वर्षा दास जी ने किया है, और बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं, 5 कविताएं हैं। मैं बीच में थोड़ा सा पोज लूंगा, आप समझ जाइएगा कि ये कविता यहीं खत्म होती है, मैं फिर दूसरी तीसरी ऐसे बोलता नहीं जाऊंगा। रविवार को आराम से धूल को झाड़ते हुए अनायास ही झड़ गए हस्तिनापुर और मगध, बेबीलोन और बुखारा, एथेंस, अलेक्जेंड्रिया एंड न्यूयॉर्क, ब्राजीलिया। इसमें एक छोटी कविता में भी कहाँ स्पेस होती है, I don't want to disclose it, but just to एक दिखाने के लिए कि छोटी कविता कैसे छोटी नहीं। इसके अंदर अलेक्जेंडर, वो तो अलेक्जेंड्रिया तो दब गया, पर इट्स ओके, धूल में चले गए, मगर बाद में क्या है, न्यूयॉर्क एंड ब्राजीलिया, द न्यूएस्ट कैपिटल ऑफ द ब्राजील इज ब्राजीलिया, सो हियर इज द स्पेस, just to disclose my point, which I should not do it. धूल पद चिन्ह बनाती है, मिटाती भी। बहुत अच्छा। वीरान जगह से आता हूं तो चिपक जाते हैं घास के बादामी बीज मेरे पेंट पे। हाँ, मैं मिट्टी हूं, ये तो एक नितांत सत्य, पर उसके लिए तो अभी देर है।
तभी कोई अंदर से बोल उठता है, कितनी है देर। हे मेघ, अलका नगरी में कुर्वक करेण कदम्ब कुंद बकुल अम्ब अर्जुन भले हो, मेरी यक्षिणी बन भले हो, पर वहां क्या धूल है। वाह, क्या बात है, वाह। लास्ट में, पत्थर से नहीं पर बहुत डरता हूं मैं धूल से, बरसती है वह टेबल पर, टीवी पर, कुर्सी पर, नगरों पर, प्रेम पर, अनदेखी, अनवरत, चुपचाप, धीरे धीरे, बहुत डरता हूं मैं धूल से। एक और छोटी सी, मेरी पत्नी तो इधर नहीं है, मैंने उसको भी जाने कुछ याद किया था। मैंने कहा आज कुछ लिखा पड़ा नहीं गया, दिन पूरा बेकार गया। तुमने क्या किया? वह बोली, मैंने तो बबू के बटन टांगे, बगीचे में वेल के पीले पत्ते खनखे, रोटी सेकते समय उसकी गंध सूंघी, पिछवाड़े कुंडी के नल के पास तोतों को सुना, बस यूं ही थोड़ी बैठी और आपकी राह देखी। एक फ्लैश की तरह कविता आती है और प्रकाश हो जाता है। वर्षा दास यहाँ बैठी, गुजराती कविता के उन्होंने बहुत अच्छे अनुवाद किए। यज्ञेश की मेरे भी कुछ कविताओं का उन्होंने अनुवाद किया है। अच्छा लगा आप यहाँ आई। यज्ञेश के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध भी रहा है बहुत सालों से, 40 सालों से, तो बहुत अच्छा लगा आज साथ में एक यूनिवर्सिटी में हम गुजराती में एमए करने के लिए आए थे, पीएचडी करने के लिए। मैं बायोसाइंस में पीएचडी हम साथ पढ़ते थे, लेकिन आज उनको रिमांड पे लेना मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उनको जाहिर में आना ज़रूरी होता है कभी। तो मैं बहुत आभारी हूँ साहित्य अकादमी का कि उनके सामने, मैं तो आमने, लेकिन तो रूबरू का ये मौका मिला और इनसे कुछ जानने का भी ये बहुत अच्छा मौका मिला। मैंने संकल्प तो बहुत किए थे कि बहुत कुछ उनको ऐसे वो करूँगा, लेकिन मैं शालीन ढंग से पेश आया ऐसा मुझे लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि मैं बहुत लोगों के अलग अलग विधाओं के, मधुसूदन ढाकी करके जो प्राच्य विद्याविद है, या ज्योति भट्ट चित्रकार है, या उमा बिहारा वाला फोटोग्राफर है, या साहित्यकार है, या बीवी दोषी स्थापति है, इनका इंटरव्यू काफी मैंने लंबा भी लिया है, 2-2 घंटे का, 3-3 घंटे का। तो तब तो क्या मैं बॉलिंग करने वाला था और सामने वाला बैटिंग करता था। इस वक्त कुछ उल्टा है कि ये इन्होंने सब कैसे बॉल फेंके, मुझे क्रिकेट में आता भी नहीं है, गुगली फेंकी क्या फेंका पता नहीं, तो मैंने तो जैसे ही लगा वो गया तो गया, कोई बात। लेकिन बहुत मज़ा आया, आपका खूब आभारी हूँ, आप सभी का भी आभारी हूँ कि आप पेशेंस से बैठे और हम लोगों को आपने सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय यज्ञेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। दरअसल विनोद जी के एक प्रश्न के उत्तर में जब यज्ञेश जी ने कहा कि और उस्ताद गालिब को कोट किया कि बाजी चाहे तफाल दुनिया मेरे आगे,
तो मेरे मन में एक प्रश्न उभर रहा था, जैसा कि सर ने पूछा था, लेकिन वो प्रश्न आगे बढ़ा नहीं और दूसरी तरफ मुड़ गया। तो मैं ये भी जानना चाहता था कि जो गालिब वो तमाशा देख रहे थे और आप जो ये लीला देख रहे हैं, तो इस लीला में अपने को कहाँ पाते हैं आप? ये आखिरी में प्रश्न पूछ करके बस इस बात को फिर क्लोज करूंगा। क्या आप उस लीला में, मैं आगे जानना नहीं, लीला में मैं लिप्त भी हूँ और अलिप्त होकर भी देख रहा हूँ, ऐसे दोनों चीजें एक साथ हो रही है। मैं वो लीला का एक पार्ट भी हूँ और लीला हो रही है ऐसा भी नहीं। वाह, आप देखें कि ये दरअसल ये शेर बहुत मायने खेज है, क्योंकि एक रचनाकार रचना में कहाँ होता है और उस रचना को कैसे पढ़ा जाए। जैसे जब यज्ञेश जी अपनी कविता का पाठ कर रहे थे, तो उन्होंने पाठ की विधि क्या हो और रचना में रचनाकार कहाँ है, इसको पहचानने की भी हमें युक्ति दिखाई। एक रचना को किस तरह पढ़ा जाना चाहिए। जब हम ऐसे बड़े मूर्धन्य लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी जूतियाँ सीधी करते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जब आप देखें, आप जरा उस शेर को जिसको कोट किया, इतना ज़रूरी वो शेर आपने ऐसे बहुत बड़े प्रश्न के साथ कि गालिब शेर कह रहे हैं कि बाजी चाहे तफाल है दुनिया मेरे आगे। अब आप देखिए कि ये दुनिया मेरे आगे बच्चों का खेल है, एक खेल का मैदान है और उस ग्राउंड से बाहर एक व्यक्ति बैठ कर के उस खेल को देख रहा है। अगला मिसरा देखिए, बाजी चाहे तफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। अब होता है शबो रोज, शब रात, रोज दिन, दिन और रात ये तमाशा मेरे सामने हो रहा है। यानी ये तमाशा देखने के लिए, अब आप देखिए वो शायर कहाँ है, वो वहां से ऐसी जगह पे चला गया जहां से सूर्य, जिसमें हम अगर दिन और रात को देखना चाहें तो उजाले और अंधेरे के रूप में देखते हैं। अब आप देखिए वो पृथ्वी के पूरे उस बाहर निकल गया उस पूरे वृत्त से और अंतरिक्ष से जैसे एक ऐसी जगह से देख रहा है जहां दोनों चीजें साथ साथ दिखाई दे रही। वो आधा दिन भी देख पा रहा है, आधा रात भी देख पा रहा है। ये और तब उसको तमाशा, वो जो अभी बिल्कुल सीधा सीधा यथार्थ की तरह दिख रहा था, अब आप जरा उस जगह से देखिए कि इस पृथ्वी पे हमारी औकात, इन अट्टालिकाओं की क्या औकात, और तमाम जो तमाशे हो रहे हैं, फिर आपको तमाशा ही लगेगा। ये यज्ञेश जी ने जब इस चीज को कोट किया तो मैं बिल्कुल इस भाव में चला गया और मुझे इस शेर का ऐसे अर्थ खुला कि एक रचनाकार होता कहाँ है। आप एक सीधी सी पंक्ति, सीधे से शेर, सीधी सी कविता में जब इस तरह से रचनाकार को पाते हैं, तो ऐसी जो बातचीत हो रही थी, हम महसूस कर रहे थे कितने विनोद जी ने इतने मार्मिक कुछ ऐसे प्रसंग उठाए और कई एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछे हैं कि ऐसे प्रश्न बहुत तैयारी करने के बाद भी नहीं लोग कर पाते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक बहुत ही अच्छे कवि, बहुत ही अच्छे भाषाविद हैं और समाजशास्त्री हैं। तो उन सब का जो पूरा एक रंग देख रहे थे हम, वो यज्ञेश जी के साथ खुल रहा था। यज्ञेश जी ने चूंकि आकाशवाणी पे लंबा समय बिताया है, तो उनका वो अनुभव भी हम देख रहे थे कि किस तरह विज्ञान, प्रदर्शकारी कलाएं, ये सब किस तरह रचना में आती हैं। मैं इस बहुत ही अभूतपूर्व बातचीत के लिए व्यक्तिगत रूप से आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत समृद्ध हुआ हूँ व्यक्तिगत तौर पे। निश्चित तौर पे आप सबको भी आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगला सत्र हमारा 2:30 पे शुरू होगा। इस बीच में आप भोजन के लिए आमंत्रित। धन्यवाद।